Hello and welcome back. Wait, I'm missing something. This is much better. Hello and welcome back to another episode of the Eeshan Arora experience. अगर बैकग्राउंड से समझ में आ रहा है, you guys know मैं कहाँ पे हूँ. Not gonna lie, it feels good to be back. It feels good to be back in your hometown. If I sound like I am going through puberty, भाई गला खराब है मेरा बहुत गंदा वाला. So just bear with me. Before I start today's episode, the reason why I'm wearing shades, ये जो मैंने fancy shades पहने हैं, there's a very important and strong reason for it, and it's very personal to me. So please इसका मजाक मत उड़ाना, okay? But Liam Payne, there goes the One Direction reunion that I was waiting for so many years. That One Direction reunion is not gonna happen anymore. That was heavy. Now I can lose the shades. But all jokes aside, guys, Liam Payne is dead, like the One Direction reunion. देखो मेरे को नहीं फर्क पड़ता यार. They had a few bangers and a few too many girls who were just mental about them. Unfortunate circumstances, died very young, was like 31. So that is so sad only when a young person dies. But other than that, I really couldn't give a shit. I'm just doing this to trigger people. What does that say about me as a person? I don't know. This is not a therapy session. But besides the point, Liam Payne is dead. So is the reunion that was supposed to happen allegedly. But ठीक है यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है genuinely. I'm just hating at this point. Coming back to this podcast episode, first thing जो मेरे को आप लोगों के साथ बात करनी है, if anyone comments on the fact that I look clapped, हाँ भाई मैंने बियर्ड निकाली. मेरी बियर्ड आउट ऑफ ग्रो बहुत ऐसा अनकेप्ट लग रही थी. मेरे को तो नहीं लग रही थी, दूसरे लोगों को लग रही थी. इट इज़ अ प्रॉब्लम जब यू आर ईटिंग फूड and before the food touches your lips, it touches your beard. I think that is when you need to draw a line. If anyone is looking for like, should I trim my beard कैसी लग रही है, अगर तुम्हारे बालों में पहले खाना जा रहा है before your mouth, I think it's appropriate to trim your beard and invest in like a good trimmer. ठीक है, मेरा trimmer बहुत फालतू है, so it's never proper. Invest in like a good trimmer because I try trimming, एक साइड से ज़्यादा हो जाता है, एक साइड से कम हो जाता है, so I just remove the whole thing. तो वही किया मैंने. Now I looked clapped. There's something about if you look good in a beard and if you just remove it like how I did, you look ugly all of a sudden. Now you can look bearable. You just remove your beard, you look like you've just gotten out of rehab for some reason. And the only people that will like your look is people that are not of your age. Like you'll never see someone who's your age being like, beard nikala, अरे भाई अच्छा दिख रहा है तू. It's always they will question, are you okay in life? They will question कि did you change your sexual orientation all of a sudden? They will question कि भाई is everything okay? It's always people who are older to you, like an aunt or an uncle or your parents who will be like, अच्छे लग रहे हो बेटा. अरे आपको तो अच्छा ही लगूंगा ना मैं. मेरे को मेरे एज के लोगों में अच्छा दिखना है. No chick is gonna go for this face. So besides the point, निकाल दिया मैंने. Stop commenting on my looks. I'm sensitive that way. Coming back to the main topic at hand, Diwali. Diwali was a few days ago whenever this video comes out, and I've got my notes here. देखो भाई, relatives in Diwali need to understand कि you have to ask new questions. आप same question बार बार repeat करोगे, मैं नया आंसर देने नहीं वाला हूँ. पहले it used to be बेटा कितने बड़े हो गए हो आप, इतने से थे, like really कितना, and then they don't even stop there. वो they add the second question के अभी क्या सीलिंग तक बढ़ोगे क्या.
भाई आप छोटे हो तो मेरी गलती नहीं है यार उसमें. इट्स ऑलवेज लाइक अरे इतनी सी से जब आपको देखा था. एंड इफ यू हैपन टू ग्रो अ लिटिल टॉल दे बी लाइक अभी क्या सीलिंग तक बढ़ोगे क्या. अरे भाई क्या क्या है ये. एवरी ईयर. एंड देन once they understand कि you can't keep commenting, you can't like just keep saying कि you've grown tall, they run out of content. So the next thing they will say is कि और कितनी girlfriends है. This is only to the guys. No relative, no Indian relative in my opinion is इतना progressive कि वो अपने niece या फिर अपनी नीस ही हो गया ना प्राइमरली. मतलब कोई भी लड़की को कोई इंडियन रिलेटिव पूछेगा और कितने बॉयफ्रेंड्स है. बट फॉर सम रीजन इंडियन रिलेटिव थिंक्स के दे थिंक के they've got all happening guys in their family. The amount of time I've been asked since the age of 16 up until now कि how many girlfriends I have with an S, and they're not talking about like female friends, they're talking about relationship and shit. I'm like bro एक नहीं है मेरे पास, एक संभली नहीं जाती, तुम S क्यों ऐड कर रहे हो. And if you give them like a straight answer ना that I'm not seeing anyone, they will not believe you. And even if you are not genuinely seeing anyone, and if you tell them I'm not seeing anyone right now, they will like चल चल हमको क्यों बोलेगा, सब समझ में आता है. अरे नहीं देख रहा हूँ मैं, इंसल्ट क्यों कर रहे हो मेरे को. It just becomes demeaning after a point. They assume that you are this big player who's just getting laid left, right, and center, and you're like, no, bro, I am not. And they take it more personally. They're like, नहीं नहीं चल चल ऐसे कैसे हमें तो पता है you've got 6 girlfriends. I'm like, where are you getting this information from? And what are these lies? I wish. And coming to annoying habits, I have to mention this also. Please do not check the envelope in front of the person who's given you the envelope. मैंने ये कितनी बार देखा है. चीप टैक्टिक्स है लोगों के. अगर आपको दिवाली के लिए पैसे दिए गए हैं, प्लीज मेक एन एक्सक्यूज, गो टू द अदर रूम, गो टू द वॉशरूम, देन चेक इट. रिलेटिव्स विल डू दिस शिट लाइट के अगेंस्ट ऐसे करके टू चेक हाउ मेनी नोट्स आर देयर. अबे क्या कर रहे हो, दिख जाता है तुम ऐसे करते हो. दे आर नॉट सटल आल्सो अबाउट इट. आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी चीप. You don't care the fact that you've been given essentially free money. You will look at it in front of the person. क्या है, please don't do this. And if you're doing it, please do it like out of sight. Because the last thing that anyone would want to see is like अगर तुम किसी को पैसे देते हो एनवेलप में, there's a reason why एनवेलप में दिया है. ऐसे ही दे देंगे ना भाई, क्यों कर रहे हैं हम लोग सब लोग. Why are we acting like civilized people? तुम मेरे सामने पैसे चेक करने वाले हो तो मैं तुम्हें उतना ही I'll give it to you without the envelope. Fucking idiots. And then they'll do this shit. अबे नोट चेक कर रहे हो क्या तुम लोग, करेक्ट है कि नहीं against the light. क्या है ये सब. And it's not the kids also. The kids will take the envelope, give it to their parents. It's the parents, dude. They'll start like doing this shit. ऐसे करने लगेंगे. Like it's like some evidence in some CID का episode. अरे envelope है, घर पे जाके देख लो, पैसे कम नहीं होंगे if you don't look at it, if you do not look at it right then and right now, पैसे बढ़ने नहीं वाले. Please do not check the envelope in front of the person who's given you the envelope. Weirdo man, पागल हो क्या तुम. Next point, crackers. What is this discussion going on? I think as a civilization we are past this point. Diwali and Holi should be celebrated without any नोक-टोक. देखो जितना डैमेज होने वाला है, if I'm being honest, वो ऑलरेडी हो गया है. ठीक है. होली is the one festival where you feel like you're a part of Aquaman and his universe. Depends on where you are celebrating Holi. Diwali is just a spectacle. So much fireworks. My question to you guys is, अगर दिवाली के वजह से our planet and our existence
is becoming reduced, wouldn't you want your last days to be surrounded by firecrackers? Damage जो जितना होने वाला था हो गया है. We have to understand that we've reached at the point of no return. It's time we just embrace it. करो pollution करो एक दिन के लिए. Just go crazy. क्रैकर्स जला रहे हो उसके साथ सुट्टा भी फूको. Even if you don't smoke, get the emotion right. I don't understand people and this thaka hua caption, don't burst patakas, be one. See, it was cool 5 years ago to use this caption. Now it's just desperate. I understand, Sushma, that no one is giving you any bhav, but if you keep using this caption again and again, you will not get any bhav in the future also. तुम्हारी arranged marriage हो जाएगी and then लड़का will tell you ये caption का क्या मतलब है. Don't burst patakas, be one. Original point being, this noke joke on pollution and bursting crackers I think should stop. I think all of us can be adults now. कुछ नहीं होने वाला है environment को. Calm down, okay? तुम्हारी 2 फुलझड़ियों से या तुम्हारे रॉकेट से the ozone is not going to feel any better. Plus, why would you not indulge in showing your neighbor कि भाई तेरे से ज्यादा मैं पैसे जला सकता हूं. This is your one shot. वो 1 बजे तक फटाके फोड़ रहे हैं, आपको मिनिमम 2 बजे तक तो फटाके फोड़ने ही चाहिए. जब तक आपके कुर्ते में छेद नहीं होता बिकॉज ऑफ द लड़ी, या जब तक एक मिसडायरेक्टेड रॉकेट किसी के घर के अंदर नहीं जाता, इज इट रियली दिवाली? तो ये फटाकों का चुतियापा बंद कर दो प्लीज. प्लीज बर्स्ट क्रैकर्स. साल में एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी नोक जोक ऑन इट. Speaking of things that people need to stop doing, अभी देखो दिवाली में ना दिवाली पार्टीज होती है लोगों के घर पे. Some people get invited, people like me get invited, obviously. पर बहुत लोगों को इनविटेशन नहीं मिलता है. And that is fine. ठीक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है उसके अंदर. But please don't be desperate about it. The number of times, and this is for all genders, I am not being sexist here. I don't think if you're sexy you can be sexist. So point being ki I've seen so many people on Instagram just complain in so many ways, saying ki I just want to dress up for a Diwali party, please let me be your +1, you know, I'll get an opportunity to dress up and everything. See, if you have to ask on Instagram ki let me be your +1, it shows that no one wants you as your +1. Get the hint? There is no reason to be itna desperate. Have I also wanted to be a lot of people's +1? Obviously. Did that happen? Fuck no. But does it mean that I became desperate and मैंने Instagram पे ये passive aggressive stories डालना चालू कर दिया, ये reels डालना चालू कर दिया कि I just want to be your +1? नहीं. If you want to be someone's +1, this is some very serious advice, okay? अगर आपको किसी का भी +1 बनना है, this is how you go about it. Do not use Instagram. Use Snapchat. Snapchat is the most shadiest, is the most creepy. Matlab, it might as well be OnlyFans at this point. Snapchat is the original dating app before Bumble, Hinge, Tinder. I don't know how long Tinder has been around,
But before ये सारे platform, Snapchat is where it was at, and Snapchat is where it is at still now. अभी a lot of people say कि if you are above certain age you shouldn't be using Snapchat. हाँ, don't tell people कि तुम Snapchat use कर रहे हो. Add people on Snapchat and start a streak with them. बोल रहा हूँ. Cause nothing screams कि I'm your plus one then a snap from someone random saying streaks. और like तुम्हारा फ्रेंड रहता है ना, बोलता है भाई 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 मेरे को स्ट्रीक मेंटेन करना है, भाई स्ट्रीक मेंटेन करना है. दैट इज इट भाई. ऐसा तुम बोल दो. इफ यू आर अ गर्ल, से दिस इन फ्रंट ऑफ अ गाय कि मेरे को तेरे साथ स्ट्रीक मेंटेन करना है. एक्चुअली इफ यू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ अ गाय, इफ ही इज इंटरेस्टेड ही विल तो बी लाइक हाँ करते. बट एज अ गाय दिस इज टॉप टियर एडवाइस. भाई ये रेड पिल एडवाइस है. फाइंड समवन यू लाइक, get her Snapchat, send her streak snaps, and if you meet her just tell her के भाई streak क्यों तोड़ दिया तूने, ऐसे क्यों किया, बोल रहा हूँ. Game set match. It's too powerful. Don't use it on everyone. But yeah, use Snapchat. Why क्यों तुम difficult कर रहे हो अपना life? If you want to be someone's plus one, use Snapchat. And ऐसे बीच में ऐसे अगर तुम जिम जाते हो तो ऐसे जिम के स्नैप भेजना. ऐसे गाड़ी चला रहे हो तो एक तो वो मैंडेटरी स्नैप है ऐसा करते हुए. Sometimes you just need to clear your mind, so I go for long drives. खत्म. Game over. That is how you get nudes. कोई बोलेगा नहीं तुम्हें. I'm telling you यहाँ पे. हाथ ऐसे रखो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे एंड टेक अ स्नैप. सॉन्ग कुड बी एनीथिंग, डजंट मैटर. सेंड इट. गारंटीड न्यूड्स. फोन तुम्हारा गीला हो जाएगा. इफ यू आर स्मार्ट यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट. बट बिसाइड्स द पॉइंट, मुंबई रोड्स, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. हर जगह खुदा हुआ है. आप अंडरस्टूड कैसे बात कर रहा हूं मैं. नया वो मेट्रो लाइन चालू हो गया, एक्वा लाइन. आई हैव नॉट गॉन देयर. मेरी तो थोड़ी फटती है अंडरग्राउंड. कुछ कोलैप्स हुआ तो योर गेम ओवर भाई. तुम्हारा बरियल उधर ही हो जाएगा. मैं हिंदू हूँ. पर नहीं डूड, मेरे को जेन्युइनली थोड़ी फटती है बंदे. बिकॉज एज मच एज आई डोंट वांट टू एडमिट इट, इंडियंस आर जुगाड़ूज. भाई 200 का चीज अगर तुम 100 में खरीद सकते हो, that same concept can be used for metros, right? It is not an irrational fear now that I think about it. मेरी बहुत फटती है. मेरे को थोड़ा डर लगता है ऐसा अंडरग्राउंड मेट्रो में ट्रैवल करने को, स्पेशली इन मुंबई. दिल्ली में तो मैं करूंगा ही नहीं. Why will I travel in a metro in Delhi? I don't want to get molested. But मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो में मेरे को ट्रैवल करने से थोड़ी फटती है, बिकॉज इंडियंस आर जुगाड़ू. एंड यू आर अंडरग्राउंड, दैट्स इट, खत्म. वहीं पे तुम सीधा मदर अर्थ के पास. तो इफ आई ट्रैवल आई विल मेक श्योर, बिकॉज कितने बार व्हेन आई एम ट्रैवलिंग थ्रू लाइक द नॉर्मल मेट्रो अटकता है बीच में तो फटती नहीं है, बिकॉज यू लाइक ठीक है भाई हो जाएगा. यू आर अंडरग्राउंड मेट्रो कभी रुक गया, यू लाइक खत्म. अंतिम संस्कार उधर ही. हॉरर मूवी बननी चाहिए ये तो भाई. अंडरग्राउंड मेट्रो में यू गेट स्टक, दैट्स इट, द एंड. आई एम नॉट इवन क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट पीपल हु आर क्लॉस्ट्रोफोबिक, आई कैन इमेजिन उनकी क्या हालत होगी. सो फक द अंडरग्राउंड मेट्रो वाला, आई एम एट इट. बट आई डोंट अंडरस्टैंड मुंबई रोड्स को क्या हो गया है. सेकेंडली, टुडे ओनली दिस हैपेंड. आई वाज गोइंग समवेयर. अभी मेरे को जनरलाइज नहीं करना है, but whatever now, it's my podcast, go fuck yourself. There was someone honking मेरे पीछे, तो I was like ठीक है, I'll let this person go. Female driver. मैंने बोला चलो ठीक है, whatever, जाना देगा इसको किधर. आगे सिग्नल है, सिग्नल रेड है, and there's a cop standing there, so it's not even like you can just leave, you can just break the signal. This bitch is honking for 55 seconds. 55 seconds का रेड लाइट है, honk कर रही है. अबे किधर जाना है देखो, उड़ने वाली है क्या तू? And then people are like, oh, it's a female है इसके लिए saying this. No, if this was a guy, I would have been like, अबे उड़ेगा क्या तू अभी? Red है signal, रुक जा. And then people are like, oh, don't generalize.
women can also drive. मैंने बोला हाँ, women can drive you fucking mental. Besides the point, that's it for today. This episode was dedicated to Liam Payne and his downfall and the reunion that One Direction fans are never gonna get. I love this shit. As someone who likes to hate people for no reason, this is amazing. Do not come at me. I don't care. Y'all are not getting a reunion. So deal with it. I hope Taylor Swift is next. Chalo, bye bye. Thanks for tuning in. If you like this, make sure you subscribe to wherever you get your podcast from. I will see you guys next time. Chalo, bye bye. Follow me on Instagram. I don't know. I don't care. Bye.